We are continuing with a lecture for acid, base and salt. This is lecture number 2 in continuation of your first lecture where I have discussed something about acid. So for the continuation of an acid, we are going to look at reactions of acid. Now, the very first reaction of acid that we are going to look is reaction of an with active metal. What happens when you add acid and a metal? एक फ्लास्क ले लो, उसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डालो और उसके अंदर एसिड डालो, धीरे धीरे एसिड डालो, क्या रिएक्शन होगी इनके बीच, ये हमारा टॉपिक है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्ट. सो डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl and dilute sulfuric acid reacts with active metal like zinc या magnesium या iron etc. to evolve hydrogen gas. Point is, whenever acid reacts with metal, it will liberate hydrogen gas. It will liberate hydrogen gas. So metal plus acid, dilute acid, it gives metallic salt and liberates hydrogen gas. Zinc metal है, reacts with H2SO4. तो जो Zn है वो सल्फेट के साथ जाएगा. This metal part is going with this non-metallic part and it forms zinc sulfate and hydrogen is separated from it. So that is the reaction of one example of the metal with acid. Now reaction of acid with a base. What will happen when acid reacts with base? When acid reacts with base, it forms salt and water and the reaction is termed as neutralization reaction. Okay, so when an acid reacts with a base, it forms salt and water. This reaction is called neutralization, and acid plus base give salt and water. Example, base sodium hydroxide, acid HCl, it gives NaCl. Na will go with Cl, it makes NaCl. HOH will get H2O, that is water. Reaction of metallic oxide with acid. What happens when metallic oxide reacts with acid? Any metallic oxide in general. It can be sodium oxide, it can be magnesium oxide. Okay, so any metallic oxide, when reacts with acid, it gives salt and water. Common product are salt and water. Copper oxide, which is black in color, is a metallic oxide. It reacts with dilute hydrochloric acid to form copper chloride, which is blue-green in color, bluish-green in color, and liberates water. So copper oxide, CO, reacts with dilute hydrochloric acid HCl, gives copper chloride, CuCl2 and H2O. Balancing part you have to understand. Copper की valency plus 2 chlorine की valency 1 minus 1 है. So compound is CuCl2. Compound will be CuCl2 because copper का जो plus 2 होता है, if at all you are able to see over here, and chlorine का जो minus 1 होता है, so 1 will come over here, 2 will go over here, and the compound form is CuCl2. So that is how we get copper chloride and water is liberated along with it. Now coming to activity 2.3. As I said, एक आप zinc granules के अंदर if you add acid to it, what will happen? Let's see. So take 5 ml of dilute sulfuric acid and a zinc granule. On the surface of the zinc granule, bubbles of hydrogen gas, bubbles form होना शुरू करेंगे. अब on passing this hydrogen gas, जो भी गैस प्रोड्यूस हुआ वो एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सोपी सॉल्यूशन के अंदर पास किया जाता है. ओके, सो इफ पास थ्रू सोप सॉल्यूशन, बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द लो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन. सरफेस टेंशन जो मतलब होता है एक उसका जो फिल्म होती है सोप की, उसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे and that bubbles are of hydrogen gas, and if you bring a burning matchstick near that, you will hear a pop-up sound. फटाक लगी और टिकड़ी की तरह फटेगा, फटाक फटाक ऐसा, it's called a pop-up sound. से वो हाइड्रोजन गैस बर्न कर रहा है. The pop sound indicates the gas is hydrogen gas. नॉर्मल ऑक्सीजन गैस होता तो पॉपिंग साउंड नहीं आता. क्या हम कैंडल जलाते हैं तो पॉपिंग साउंड आता है? Does it make any pop-up? ऐसा नहीं होता है ना. Oxygen will not burn with a popping sound. Hydrogen will burn with a popping sound. So let's come to the further go with an activity. On taking a burning candle near a gas filled with bubbles, a gas burned with a pop sound. All other acids, that is HCl, HNO3 and CH3COH, acetic acid, कोई भी एसिड ले लो,
they show the same observation. आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर एसिड अंदर कोई डाला है, it will pass through the gas will be produced. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पहले आएगा, वो गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन के अंदर आएगा. This gas will come out over here, and if you bring a lighted candle over here, the gas will burn out with a popping sound. It indicates the presence of hydrogen gas. Activity 2.4. Take 2 ml of sodium hydroxide solution and granulated zinc. So sodium hydroxide base दिया हुआ है and adding zinc metal to it. It gives sodium zincate and liberates hydrogen. So the reaction is as over here. There is another activity which is 2.5. ये सारी activities textbook के अंदर are given in the form of few activities without any reaction. You need to understand कि आपको ये activities याद रखनी है, practice करनी है, तो आपके concept clear हो. Now, if you look at the test tube A and test tube B, Na2CO3 plus 2HCl, that HCl is taken. Sodium carbonate is reacted with hydrochloric acid. It gives sodium chloride, water, and carbon dioxide. Sodium bicarbonate, if it is taken, या sodium hydrogen carbonate NaCO3. This is sodium hydrogen carbonate. When you add HCl to it, it gives NaCl plus H2O plus CO2. On passing the carbon dioxide gas through the lime water, the lime water it turns milky because insoluble white precipitates of calcium carbonate is formed as shown below. तो calcium hydroxide के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, लाइम वाटर के अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया उसको हम पास करेंगे, it gives white precipitate. Precipitate का मतलब होता है दाने, छोटे 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 दाने आएंगे. There are white precipitates are formed. किसके precipitate होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या रिलीज करेगा? H2. On passing excess gas through the lime water, it become colorless. तो reaction continue further. CaCO3 और H2 हुआ, उसके अंदर और CO2 ऐड करो, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करोगे तो कलर में भी the lime water का जो कलर होता है it will turn colorless and it will form calcium bicarbonate CaSO3 twice. So metal carbonate या metal hydrogen carbonate when reacts with acid it forms salt, carbon dioxide and water. The last line, activities are required to be noted down. They are required that you remember the reaction. ऐसा नहीं पूछेंगे कि write a note on activity 2.5. Question would be what happens when reaction आ गई, what happens when excess gas of carbon dioxide is passed through lime water. Okay, तो आप क्या लिखोगे उसको? गड़बड़ हो जाएगी आपके पास. Okay, और through the calcium carbonate, what will happen through it? तो it will create a problem unless and until आपकी activity आपकी perfect आपने इसको prepare नहीं की हो. Now activity 2.6, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लेना है. उसके अंदर 2 ड्रॉप याद है ना फिनोल्फ्थालीन, लास्ट वीडियो लेक्चर में we have discussed. Add 2 drops of phenolphthalein solution. Color of the solution will become pink. Remember the property. Phenolphthalein will convert the base into pink color. On adding dilute HCl solution drop by drop to the above solution, the reaction mixture changes to colorless. Okay, so neutralization reaction हो जाएगी and then it will become colorless. Phenolphthalein color changes from pink to colorless as the neutralization of HCl and NaOH take place. So because of the neutralization reaction, जो pink color हुआ था by adding phenolphthalein, उसके बाद अगर हम HCl ऐड करेंगे तो बेस के अंदर एसिड ऐड कर रहा है, NaOH is the base, HCl is an acid, neutralization reaction होगी and it will become colorless. Activity 2.6, on adding few drops of NaOH to the above mixture, pink color reappears. वापस अगर हम उसके अंदर pink NaOH डालेंगे, again the pink color will reappear because initially the effect of the base was nullified by acid and so the color changed to the colorless. But when you add more drops of NaOH, it will have the more basic property. इसलिए it will convert the phenolphthalein back into the pink color. So base plus acid is giving salt plus water. So activity 2.7, when dilute hydrochloric acid is added to copper oxide solution, the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. So copper oxide के अंदर HCl डालोगे तो it gives copper chloride and H2O is formed. Okay,
तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्ट इज फॉर्म दैट इज कॉपर क्लोराइड का, एंड हाइड्रोजन गैस एंड वाटर इज लिबरेटेड अलोंग विद इट. नाउ कमिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज. You are arranging the few metals, not all metals, few metals in the order of the reactivity. कौन कितना ज़्यादा react? What is the meaning of reactivity? Reactivity is generally with respect to what? So it is with respect to acid or a base, and it can be a reaction with a moisture. कोई चीज़ खुले में रखने पे क्या moisture के साथ react करती है या नहीं, ये हमें देखना है. तो basically on those 2-3 factors, the reactivity of a metal is determined. This reactivity series which is there, उसके लिए like which is the most reactive metal, it is the potassium, and which is the less reactive metal, gold. गोल्ड को पता ही होगा, गोल्ड अब कितना भी पहन ले, चेन के फॉर्म में पहन ले, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन ले, बैंगल्स के फॉर्म में पहन ले, क्या गोल्ड काला पड़ता है? नहीं. Why? Because it will not react with oxygen which is present in the atmosphere. So we consider gold is to be least reactive. क्या सिल्वर काला पड़ता है? हाँ. 10 को ज़्यादा बताओगे, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो आप नवरात्रि में पहनते हो, अगर तो आपने 1 साल तक यूज़ नहीं किया, नवरात्रि यूज़ करते हो, तो बिफोर नवरात्रि उसको आपको पॉलिश करवाना पड़ता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा काला पड़ता है. काला कैसे हो गया? बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद एयर, मतलब ऑक्सीजन, ओके, तो इट लूजेस इट्स शाइन. वैसे कॉपर, आप जो भी पूजा में हमारे कॉपर के वेसल्स होते हैं उसको भी देखोगे तो थोड़े दिन में, 2-3 दिन के उसके अंदर उसकी लस्टर, उसकी चमक चली जाती है. व्हाई? बिकॉज अगेन इट इज अ रिएक्शन विद एटमॉस्फेयर. सो बट इज स्लो रिएक्शन. पोटेशियम जो है या सोडियम है, फटाफट रिएक्ट करता है, बहुत स्पीड में रिएक्ट करता है अलग अलग जगह. ओके, सोडियम को है पानी में नहीं रख सकते. सोडियम को, मेटल को अगर हमने पानी में डाला तो इट विल कैच फायर. यू हैव टू स्टोर इट इन केरोसिन. हर एक अपना रिएक्टिविटी, हर एक की अपनी अलग होती है, बराबर है. तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, देन कम सोडियम, देन कम कैल्शियम, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड. हाइड्रोजन जो है वो LOC है, डिवाइडिंग लाइन है. हाइड्रोजन इज नॉट मेटल. हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ वी कंसिडर अ मोर रिएक्टिव मेटल. हाइड्रोजन के नीचे वी कंसिडर अ लेस रिएक्टिव मेटल. सो दैट इज समथिंग अबाउट द हाइड्रोजन पार्ट. व्हाई हाइड्रोजन इज used over here in the reactivity series. You will study in your 11th standard कि क्यों हाइड्रोजन को ही रखा गया to separate a more reactive and a less reactive metal. Now there is, कैसे याद रखोगे ऐसे नाम? अगर तो एग्जाम में पूछ दी, you can just remember like this line. Okay, मोनोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, कि ऐसे कुछ सिंबॉलिक, कुछ पिक्चोरियल, कुछ वर्ड्स से हम जो याद रख सकते हैं. तो मोनोनॉमिक्स फॉर द reactivity series, like please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper says gold. तो हर एक का पहला लेटर उस पर्टिकुलर मेटल के साथ correspond करता है. P is potassium, stop is sodium, Ca, L is calcium, Me stands for magnesium, A is for aluminium, Car से कार्बन आता है, Z से जिंक आता है. तो that is how the monomics is there for this particular reactivity series. Note it down, reactivity series काम की है. Note it down this monomics to remember the order of the reactivity series. Now, sodium and sodium, they react explosively with dilute acid, liberating hydrogen. Acid अगर डाल दिया तो blast कर देगा, बूम, बराबर है. And साथ में hydrogen release करता है. They are considered to be highly reactive. Calcium reacts less comparatively vigorously with dilute acids than sodium and potassium. Magnesium, aluminium, zinc reacts with dilute acids with decreasing vigor, liberating hydrogen gas. Coming to zinc, Pb and copper do not give hydrogen with dilute or concentrated acid. Only lead reacts with concentrated HCl to liberate hydrogen gas. Whereas नीचे की तरफ जो metals है Ag, Pg, Au, no reactions will occur with them with any of the acid, so they are considered to be the least reactive. Activity 2.8 is what now we are coming to. Activity in a given set, when different solutions are poured in a beaker separately, following observations are added.
व्हाट वी आर एडिंग HCl, H2SO4, ग्लूकोज, अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐड करने के बाद एक सर्किट रखिए जहाँ पर बल्ब इज कनेक्टेड, आप जैसे देख रहे हो बीकर के अंदर सर्किट रखिए, रबर कॉर्क है, ओके, एंड देन इट्स कनेक्टेड टू द बल्ब। अब बल्ब जलता है या नहीं जलता है, बल्ब चालू होता है या नहीं चालू होता, दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। हम पहले लाए एसिड, कौन सा एसिड, HCl डाल, बल्ब जलेगा या नहीं, बल्ब विल ग्लो, रिएक्शन, रीजन इज लाइक हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड added, bulb will glow, hydrogen ions are released, glucose, it will not glow, bulb will not glow because hydrogen or hydroxide ions are not released. Alcohol does not glow, again the reason remains same. Sodium hydroxide, it releases, it glows because hydroxide ions are released. Calcium hydroxide, it glows because hydroxide ions are released. मतलब जब एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं, दे लिबरेट हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बल्ब विल ग्लो। दैट इज योर मॉरल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। नाउ एक्टिविटी 2.9, on adding concentrated sulfuric acid to the test tube containing NaCl, the reaction takes place and dry HCl gas is produced. A fuming gas आएगा, okay. On testing this gas with litmus paper, following observations are recorded. HCl gas के अंदर जब हम ड्राई लिटमस पेपर डालते हैं, no change of color of blue litmus paper, तो blue litmus का पेपर डाला, it will there is no change in color. HCl gas के अंदर अब ड्राई पेपर की पर वेट करके डाला, वेट लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस उसका जो ब्लू कलर का पेपर है उसको थोड़ा सा वेट कर दिया, मॉइस्ट कर दिया, and when you add it, the blue litmus paper changes to red. This activity infers that only HCl solution releases H ions and acidic property exists due to H plus ions. So HCl का जो solution होता है, it has only a capacity of releasing hydrogen ions, and जब hydrogen ions होंगे तो उसकी acidic property दिखाएगा, otherwise वो acidic property नहीं दिखाएगा। On adding a few drops of concentrated sulfuric acid to the water in a beaker, it becomes hot as the reaction is highly exothermic. Exothermic is liberation of heat. Okay, sulfuric acid को डालोगे, okay, तो बीकर के अंदर, पानी के अंदर, तो एकदम गरम गरम हो जाएगा पानी। On adding sodium hydroxide pellets to water, the beaker becomes hot, and again the reaction is exothermic. Sodium hydroxide हो या sulfuric acid हो, both reactions are exothermic in nature. So these are the few activities. Now what we are coming to is uses of certain acids. The uses are like GMP, गोखी मारो पूछा से, लर्न करना है, नो रॉकेट साइंस, हर यूज एक एक लाइन के साथ परफेक्ट होना चाहिए। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ केमिकल, उसका कोई रीजन होगा। अब इंडस्ट्रीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सटेंसिवली यूज, बहुत सारी जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज, वो इतनी सारी जगह पर यूज होता है बनाने में अलग अलग प्रोडक्ट को, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। नाउ कहाँ कहाँ यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड? टू प्रिपेयर पेंट्स, एशियन पेंट कंपनी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, प्लास्टिक बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रग्स बोले तो दवाई, डिटर्जेंट पाउडर्स, सेल्यूलोइड फिल्म्स, ओके, सेल्यूलोइड फिल्म जो होती है वो, एंड फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बाप है, उसमें से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट एंड वेरियस अदर केमिकल्स आर फॉर्म यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज यूज्ड इन पेट्रोल रिफाइनिंग, इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, कार की बैटरी आती है उसके अंदर एसिड होता है, ओके। देखो ये मूवी है अजय देवगन की गंगाजल, बैटरी में से पूरा एसिड निकाल के, ओके, मूवी देखना बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड इन क्लीनिंग ऑफ द मेटल surfaces before they are coated with other metals. So these are the uses of sulfuric acid. Next is nitric acid. इसके uses थोड़े कम है, कुकिंग का बराबर है। नाइट्रिक एसिड टू प्रिपेयर डाइज, डाइज अगेन मीन्स बहुत सारे कलर पिगमेंटेशन के लिए, चाहे वो कपड़े में हो सकती है, चाहे वो ऐसे सनमाइका वगैरह में यूज हो सकती है। एट एनी पॉइंट हमको डाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो
टू प्रिपेयर द डाइस, ड्रग्स दवाइयाँ, एक्सप्लोजिव्स, फर्टिलाइजर दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक्स बनाने में, क्विक ड्राइंग ऑफ द पेंट्स, ओके थोड़े पेंट्स ऐसे आते हैं तो फटाफट ड्राई होने चाहिए, फॉर दैट नाइट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लू, चिपकाने के लिए ग्लू, इन द प्रिपरेशन ऑफ द मेटल क्लोराइड्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आर्टिकल, मेटल है उसमें तो उसका कोई कचरा निकालना है, इम्प्योरिटी काला पड़ गया हो तो उससे यूज हो सकता है, मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन विद जिंक एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ओके तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर द ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च इट कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होता है which will increase the rate of reaction but will not take part in reaction, कोई reaction without any other chemical 10 घंटे में हो रही है, आपने कोई कैटलिस्ट डाला 5 ग्राम तो instead of 10 hours that reaction will get completed in 8 hours, आपने 5 ग्राम कैटलिस्ट डाला you will get back the 5 ग्राम कैटलिस्ट that catalyst back, it will not take part in the reaction but it will increase the rate of reaction, that is what we call as a catalyst. So in the removal of the deposits called scales formed inside the boilers in industry, जो इंडस्ट्री का बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं तो धीरे 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 उसके ऊपर एक लाइनिंग बन जाती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, उस लेयर को वॉश आउट करना है तो नॉर्मल पानी से वॉश आउट नहीं कर सकते हो, यू नीड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दैट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ बॉयलर्स। एक और एसिड इट्स एन एसिडिक एसिड, इट इज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ओके जैसे आयोडेक्स के अंदर एक स्मेल आती है, एक फ्लेवरिंग एजेंट होती है, तो वैसा बहुत से अलग अलग जगह पर दिस एसिडिक एसिड इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। नाउ इन वन लाइनर citric acid, that is a vinegar, it is used as a food preservative, boric acid for high wash, oxalic acid in ink stain remover, कपड़े पे ink का दाग लग जाए you can use oxalic acid, tartaric acid as an ingredient of the baking powder, कड़वा होता है थोड़ा bitter होता है, carbonic acid it is a flavoring drink, जो भी हम कार्बोनेटेड बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थम्स अप कोका कोला सबके अंदर it's a carbonic acid. So that was all about acid till over here. Now what we are going to look at is a topic for base. So let's see about importance of base, what are the properties, what are the uses, how the base is there, what is monobasic. Okay, so we'll come to the various definition of base and everything. A base is either a metallic hydroxide or a metallic oxide or an aqueous ammonia which react with an acid to form salt and water only. So basic definition है, base की जो एक definition है, base का टेस्ट कैसा होता है, bitter and it is slippery, soap जैसा होता है, okay. A base is a compound which reacts with an acid to form salt and water only. बहुत सारे base है, okay. कैल्शियम ऑक्साइड टेबल नोट कर देना, सारी स्लाइड्स को लिखते रहना, बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide COH twice, magnesium hydroxide MgOH twice, iron hydroxide FeOH twice, iron hydroxide FeOH thrice, ammonium hydroxide NH4OH. Alkali, these are the base, special category के base है, okay. Why special category के base है? Let's see. An alkali is a compound which, when dissolved in water, yield hydroxyl ions. So it gives hydroxyl ions, that is OH minus ions. ये minus थोड़ा ऊपर जाएगा, OH dash नहीं है, OH minus ions. As the only negative charge ion it is giving out, alkali will give out the negative charge ion, which is OH minus ion. And alkali is a base which is soluble in water. Bases not soluble in water are not alkali. जो बेस है और पानी में डिजोल्व होता है, मतलब 100% वो alkali है. जो बेस है but not soluble in water, तो वो alkali base नहीं है. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Example of alkalis like soluble bases, कौन से are alkali? Okay, so like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide. Okay, ये सारे ग्रुप 1 के ये सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में है, पोटेशियम ग्रुप 1 में है. Okay.
So these two are the element of the group 1. They are एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स कहे जाते हैं, अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं. उनमें से आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. They are known as alkalis. Further the classification of base, जैसे एसिड का क्लासिफिकेशन में देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वैसा ही we are going to look at strong base and weak base. स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जिसका कंप्लीट डिसएसोसिएशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयंस इसके अंदर हो जाता है. They are called strong base. Complete disassociation. Okay. Example: potassium hydroxide. It converts into potassium ion A plus OH minus. Sodium hydroxide Na plus OH minus. Weak base. A base which undergo partial disassociation. Complete नहीं होता है, partial होता है. In aqueous solution and produces a low concentration of hydroxide ion in a solution is called weak base. Example: magnesium hydroxide, which is NaOH twice. Ammonium hydroxide is NH4OH. Ammonium hydroxide is NH4OH. So partial dissociation होता है, complete dissociation नहीं होगा. They are known as weak base. इसके अलावा another way of classification of base is concentrated alkali and dilute alkali. And alkali having a relatively high percentage of alkali in its aqueous solution. alkali का जो कंटेंट जब ज्यादा होगा in an aqueous solution we call concentrated alkali, and alkali having a relatively low percentage of an alkali in aqueous solution, they are all known as dilute alkali. Based on the acidity of the bases, so the number of hydroxyl ion produced by the dissociation of one molecule of a base in its aqueous solution is called its acidity. Term acidity there nothing to do with acid. कितने हाइड्रोक्साइल आयन एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस में से बनता है, उसके ऊपर से वी आर कमिंग टू द टॉपिक नोन एज एसिडिटी ऑफ बेस. एक हाइड्रोक्साइल आयन बनेगा तो इट्स मोनोबेसिक, दो बनेंगे तो डाइबेसिक, तीन बनेगा तो ट्राइबेसिक. सो लेट्स कम मोनो एसिडिक बेस, bases which dissociate into aqueous solution to produce one hydroxyl ion. एक ही हाइड्रोक्साइल आयन बनाता है पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस आर कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस. तो एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे मोनो एसिडिक बेस है. डाई एसिडिक बेस, तो विच आर द डाई एसिडिक बेस which gives out two hydroxyl ion per molecule, which gives out two hydroxyl ions per molecule of the base. They are known as diacidic base. Bases with dissociate, छुट्टा पड़ना, अलग होना, break आना, with dissociate in aqueous solution to produce into hydroxyl ions per molecule of the base are called diacidic base. Example: calcium hydroxide, zinc hydroxide and copper hydroxide. Triacidic base, a base will dissociate into aqueous solution to produce 3 hydroxyl ions per molecule of a base is called triacidic base. Example: aluminum hydroxide, ferrous hydroxide. Okay, they are trihydroxide ion giving bases. Basically they are water insoluble. ये पानी में dissolve. Triacidic base जो है वो पानी में dissolve नहीं होते. They are not alkalis. Okay. Now general characteristics and properties of base. What are the general characteristics and properties? Again it is in what we might have seen in a backslide. Taste and feel. Taste हमें पता है, it is bitter, and feel we know it is a slippery. लिखते रहना है सब. Corrosive nature. Both caustic soda and caustic potash are caustic in nature. That is, there is a strong burning action on the skin and produce blister. खुले कर देंगे. तो caustic soda and caustic potash, they can create a blister. Action on indicator. जब बेस करते तो रेड लिटमस पेपर डालते, it will convert into blue. मिथाइल ऑरेंज में from orange to yellow. phenolphthalein में from colorless to pink. That is how the change of color आ सकता है in case of indicators. Further, conduction of electricity. Like acids, the solution of base in water also conducts electricity. Okay, that activity we have seen. Reaction with acid. So coming to the topic is like reaction with acid will continue from here in my next lecture, because एक साथ में अगर बहुत चला गया तो आपके ऊपर लोड आएगा. We have seen the various topics जो हमारे काम के थे, बहुत सारे यूजेस देख लिए, बेस की हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. ओके, उसके हमने नेचर को देख लिया,
what is मोनोबेसिक ट्राइबेसिक ये सब देखा है. So my dear students, reaction of acids में हमने पूरे रिएक्शन देख लिए. So you need to learn a lot till slide whatever the slides we have given we have covered with slide number 69 जहाँ से हमें शुरू करना होगा next time. And ensure that आप ये सारी slides लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा. तो wait for my next video lecture. Till then, practice from here. Stay healthy, stay safe. Goodbye.